and welcome to English Grammar Cafe. Today we are going to learn question text. Question text क्या होते हैं, इन्हें यूज़ क्यों किया जाता है और इनको यूज़ करने के रूल्स क्या क्या हैं, ये सब सीखेंगे हम आज के लेसन में. But before starting our lesson, I would like you to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification of my videos. Now let's start today's lesson. Question text क्या होते हैं? Question text are the short questions which are added to a statement. For example, you are not speaking the truth. Are you? It is Monday today, isn't it? तो ये जो पीछे से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने स्टेटमेंट के बाद लगाए हैं वो होते हैं क्वेश्चन टैग्स. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई आर दे यूज्ड? इन्हें यूज क्यों किया जाता है? सो क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड टू कंफर्म अ स्टेटमेंट. जब हम किसी स्टेटमेंट को कंफर्म करना चाहते हैं तब हम क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट हिंदी, तो हिंदी में जब हम बोलते हैं वो काम कर रही है ना, तो जब मैं बोलती हूँ है ना, इसका मतलब होता है मैं सामने वाले से चाहती हूँ कि वो उस सेंटेंस को कंफर्म करे कि हाँ वो काम कर रही है. तुम्हारे पापा एक डॉक्टर हैं, है ना, तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला भी बोलेगा हाँ हैं. इन द सेम वे इन इंग्लिश वी यूज क्वेश्चन टैग्स टू कंफर्म द स्टेटमेंट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रूल्स टू यूज दिस क्वेश्चन टैग्स? इन क्वेश्चन टैग्स को यूज करने के रूल्स क्या क्या होते हैं? सो रूल नंबर 1, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव question tag must be positive. For example, you are allowed for this, aren't you? Or you aren't allowed for this, are you? तो आपने यहाँ देखा, जब मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव था क्वेश्चन टैग नेगेटिव था, और जब सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है. नाउ रूल नंबर 2, statement and question tags must be of same tense, means they should have the same helping verb. Now let's see the examples. Jack is from England, isn't he? Now यहाँ हमने देखा कि statement and question tag both have the same helping verb is. Mary can speak English, can't she? Here also statement and question tag have the same helping verb can. Now rule number 3, for negative question tags use the contracted form of helping verb and not, like shouldn't, haven't, can't, doesn't, don't, and so on. For example, she is doing her work, isn't she? Isn't is the contracted form of is and not. Now rule number 4, only pronouns are used to form question tags. We never use a noun to form question tag. For example, Mohan loves his cat, doesn't he? Now in question tag I cannot say doesn't Mohan. That will be wrong. In the statement Mohan has been given, so in the question tag I will use pronoun in place of Mohan, he. I hope question tags are clear to you. And now let's check your understanding with the quiz. And you have to choose the correct option to form the question tags. Now here is the quiz. Our first sentence is the children are playing. Choose the correct option. Now the second one, his uncle lives far away. Choose the correct option. You are so curious. Guess the right answer. Next one, the post office is closed. What should come? Now the next one, you have visited that park. I hope you have guessed the right answer. Now the next one, we should study some more. Okay, fine. Now here is the answer sheet. Check your answers with this answer sheet. Awesome. Now I hope today question tags are clear to you. Now let's meet in the next video. Till then, bye.